Hello everyone, this is Shazia Murdani. Welcome again to my channel, Enlightening While on Earth. Our today's topic would be about truthfulness, honesty, sincerity, loyalty. It's all out of truthfulness, but we will focus more just on truthfulness today. You must have seen many examples these days where people, just to get by things, kind of don't really be honest and tell you things as they are. Yeah, but the main disadvantage of that is that people stop trusting such people, such folks. And whereas truthfulness, you will, in some difficult situations, you will see it's a little harder to speak the truth, but truth is has longevity, and whereas lying harms the society, harms people that we are interacting with, and not just that. If we have children, they learn it from our behavior, and they do the same. They say there's no harm, since my parent that I love so much and they love me so much, they were doing it, so maybe I can do it too. And once you cross that boundary of speaking the truth, it kind of becomes your second nature. And lying is very detrimental to an individual, as well as his family, as well as his community and the society at different levels. We can go over multiple examples on that. And I also want to, because there has been a request to me by my viewers that I only speak English, and they would like to hear me in Hindi and Urdu. So let me also explain things in Hindi and Urdu as I talk about truthfulness here and also in my upcoming sessions. तो क्या होता है कि जब हम झूठ बोलते हैं, हम सच को प्रेफरेंस नहीं देते हैं. कुछ सिचुएशंस में सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन सच बोलने के फ़ायदे बहुत हैं कि हम एतबार जो है, ह्यूमंस के बीच में जो एतबार है, जो ट्रस्ट है, उसको हम कायम रख सकते हैं. लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो वो एतबार टूट जाता है, और जब एक दफ़ा एतबार टूट जाता है तो उस एतबार को बनाना दोबारा बहुत मुश्किल होता है. So again, what I was saying is that when we are truthful to each other, it keeps the trust between two people. But when we start lying, it breaks that trust, and it's very, very difficult to mend it back. It takes a lot of effort. So God has said in all his divine messages and divine books to stay truthful no matter how hard it is. And you will see that all the messengers so far in history, no matter how difficult their journey was on earth, they did stick to being truthful, because God is the ultimate truth. There is no lie associated to God. And water can mix with water, but oil cannot mix with water, no matter what you do. तो मैं जो बोल रही हूँ वो ये है कि सच कितना भी मुश्किल था, हमें खुदा ने हुक्म किया है सच बोलने का. और हमारे जितने भी खुदा के पैगंबर आए हैं दुनिया में, या मैसेंजर्स आए हैं दुनिया में, वो हमेशा ट्रूथ पे कायम थे, सच पे कायम थे, और झूठ से किनारा कशी कर लेते थे. बिल्कुल झूठ नहीं बोलते थे वो, क्योंकि जो डिवाइन है वो ट्रूथ है, वो सच है. और झूठ हमें शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. और यकीन करें कि पानी में मिल सकता है, लेकिन तेल पानी में नहीं मिल सकता. खुदा जो है वो सच है. तो जब तक हम अपने आप को पाक नहीं कर लेते, पवित्र नहीं कर लेते झूठ से, हम खुदा में एक नहीं हो सकते.
इस ऑयल हमारे अंदर जो इम्प्योरिटी है, जब तक वो है हम पानी से मिल नहीं पाएंगे, चाहे हम कुछ भी कर लें. सो ट्रूथ इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स of a person's salvation in spirituality. Like, that's the first step. If you are not able to speak the truth, you have not even climbed up the first step. So regardless how difficult the situations are, try to speak the truth. There was an example. There was a story when I was a kid. I was told by my parents, and actually I think I read in one of my textbooks too, that a kid, out of his naughtiness in the village, he would just keep screaming, "Oh, the lion is here, the lion is here, save me, save me, save me." And the villagers would come running and help him that, "Oh, there's a lion, and we don't want this kid to be all eaten up by the lion as his feast." So they would come and run towards him, and they would not find any lion. And the kid did it like 3 times, and they all kept coming. But the 4th time, when a kid tried to do that, when there was actually the lion, nobody came up to him to help him, because he was always a liar, and nobody trusted in him. And unfortunately, that was the end of that little kid. तो उर्दू में और हिंदी में बताती हूँ मैं कि जब हम छोटे थे तो हमने ये स्टोरी अपने पेरेंट्स से सुनी थी और अपने स्कूल के बुक में भी पढ़ी थी कि एक छोटा बच्चा है, वो कहता था शेर आया, शेर आया. तो गांव के सारे लोग आ जाते थे उसकी मदद करने के, हम शेर से इसको बचा लें. लेकिन वो जब भी आते थे उसकी पुकार पे, तो शेर तो होता ही नहीं था, वो झूठ बोल रहा होता था बच्चा. तो 3 दफ़ा जब उसने ऐसा किया तो सारे गांव वाले आ जाते थे उसकी मदद करने. लेकिन जब उसने ये 4थी दफ़ा किया तो उसके बाद कोई नहीं आया, बिकॉज वो समझे कि ये झूठ बोल रहा है. लेकिन तब शेर और लायन वॉज एक्चुअली देयर. तो वाकई में वो वहाँ था. उसकी वजह से वो बच्चा हलाक हो गया और उस बच्चे की जान चली गई, बिकॉज कोई भी उस पर एतबार नहीं कर रहा था. सो दैट स्टोरी दैट इज टोल्ड टू मी बाय माई पेरेंट्स और माई टीचर्स इन माई चाइल्डहुड, it really holds a lot of weight. As we get older, we go into our careers, as we face the world. The credibility of the person truly relies on his speech of truthfulness. Once or twice you can probably get by it, but as soon as your lie manifests and people know that you are lying, they stop trusting in you. And I was searching just to even before I could speak in front of you, I was searching through books and Imam Ali's sayings, and I found I basically revised all that in my head again, because these are the books I have been reading all along. But to come in front of you, I wanted to make sure that I read it just one more time. And again, in Hindi and Urdu. तो हमेशा क्या होता है कि जब हम ये स्टोरीज जब हम जो बचपन में सुनते हैं ना अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर्स से स्कूल में, तो जब हम रियल लाइफ में आते हैं, जब हम अब करियर में आते हैं, जब हम सोसाइटी में अपना एक पोजीशन बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग जो है ना वो अट्रैक्ट ज़्यादा सिंप्लिसिटी और सादगी और सच्चाई से होते हैं. कोई भी शॉर्ट रन में अगर आपकी किसी बात से अट्रैक्ट हो गया, वो वेट नहीं कैरी करती, वो ज़्यादा चलती नहीं है. ज़्यादा चलती आपकी ईमानदारी है, ज़्यादा चलती आपकी सच्चाई है. और मैं आज दोबारा से वो किताबें पढ़ रही थी आपके पास ये प्रेजेंट करने से पहले, कि जो मैंने अपने बचपन में पढ़ी हैं. मतलब इमाम अली के क्या फरमान हैं, या हमारे दूसरे जो पैगंबर आए थे उनके क्या फरमान हैं, या भगवद गीता में क्या लिखा है, या रामायण में क्या लिखा है. और मैं अभी वही चीज़ें आपको दोबारा यहाँ पे पेश करूँगी कि सच बोलना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में. So back to English. And I'm sure people who only know English will probably, in a few sessions, will catch on my few words that are said in Hindi and
Urdu, and they will probably learn a few words through my sessions too. It's going back and forth. And similarly, people who know only Hindi and are not very comfortable with English will probably catch a few words in English, and it goes both ways. तो मैं back to Hindi, जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि कुछ लोग जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं वो शायद बेनिफिट करेंगे कि मेरी हिंदी से और मेरी उर्दू से, और उसको सीखे कुछ वर्ड्स शायद वो सीख लें मेरे सेशंस के थ्रू. और सिमिलरली जो लोग सिर्फ उर्दू और हिंदी जानते हैं और इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं जानते, वो शायद मेरे कुछ वर्ड्स इंग्लिश के कैच कर लें, और दोनों तरफ शायद फ़ायदा हो जाए दोनों की लैंग्वेजेस के लर्निंग में. तो मैं अब लेट मी नाउ गेट स्टार्टेड on some of the learnings, especially first from Imam Ali ibn Abi Talib, जो मैंने इमाम अली के quotes मैं यहाँ पे बयान करना चाहूँगी. I would like to mention the quotes from Imam Ali, and I will also translate those to Hindi and Urdu. So, first and foremost, surely the truth is heavy, but good for you. And surely falsehood is light but harmful. In Hindi, it means ये सही है कि सच बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो आपके लिए बेहतर है. And झूठ बोलना आसान है, लेकिन वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है. Again, मैं थोड़ा सा एक next पे जाते हैं, next quote पे. So next quotation of Imam Ali ibn Abi Talib is, the right path is a course full of pitfalls. So the one who has a sound character will go freely, and the one who stumbles will perish. In Hindi, what that means, it's a very deep quotation. In Hindi, इसका ये मतलब है कि जो सही रास्ता है ना, जो सच्चा रास्ता है, उसमें वो सीधा सीधा नहीं है, उसमें उतार और चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, और उस पर आसानी से वो बंदा चल सकता है जिसकी अपनी शख्सियत जो है वो सॉलिड है, उसका कैरेक्टर सॉलिड है, वो जो उसको पैगामात पे, मतलब जो टीचिंग्स दी गई हैं डिवाइन की, उस पे वो चलता है. इसलिए वो तो पार उतर जाएगा, वो ऊपर नीचे उसने प्रैक्टिस काफ़ी की हुई है इन मुश्किल चीज़ों की, तो वो चला जाएगा इस पे से. लेकिन जिसका कैरेक्टर थोड़ा ढीला है ना, तो वो बड़ी मुश्किल में आ जाएगा. नेक्स्ट, truth sets a good example and falsehood confuses. If you remember my example from example from Imam Ali ibn Abi Talib's letter in my last video, that do not be friend with a liar because he's like a mirage, making distance seem near to you and near seem distant. What that means is mirage is something that deceives you. Mirage is something that confuses you. A thirsty person thinks of mirage as the source of water and want to go there, and then he finds that there is no such thing there. So falsehood actually confuses people, and hence the example of mirage. In Hindi, जो सच है ना, वो एक अच्छी एग्जाम्पल है, एक अच्छी मुशाबहत है, और जो झूठ है ना, वो एक बंदे को बड़ा कंफ्यूज करता है, उसको बौखला देता है. वो क्यों ऐसा है? क्योंकि जो झूठ है ना, वो उसके कोई पैर नहीं होते, वो चल नहीं सकता. झूठ एक मिराज कहते हैं रेगिस्तान में, जो एक रेत बना देती है, एक वहम सा कि यहाँ पानी है, और वहाँ पानी होता नहीं है. वो एक वहम सा होता है जिसको फिजिक्स में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, कि वो जो लाइट जिस तरह ट्रैवल करती है उसकी वजह से वो एक बन जाता है कि यहाँ पानी है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है. तो प्यासा वहाँ तक जाता है पानी के लिए, लेकिन वाटर या पानी उसको मिलता नहीं है. तो झूठ उसी तरह से है. और गोइंग फॉरवर्ड, द मोस्ट डिफिकल्ट डिसेप्शन is to present falsehood disguised as truth to someone with a discerning intellect.
Nothing will give you intimacy except the truth. And nothing will make you feel lonely except falsehood. And hence, you will see those who lie a lot, they will say, oh, I prefer to be lonely and I enjoy my loneliness. And they're lonely because good company doesn't want them there. Good people don't want liars around because they don't want to fool others. And so those who try to disguise people, they want to present lie as truth. They hide information from you. Their behaviors are like that. Their brain works like that. They probably need actually some counseling and some help to come out of such habits. They have a habit of hiding. They have a habit of not telling you the entire truth. They have a habit of changing the sequence of things. And this is all they think is to their benefit, whereas they are actually harming themselves very much by doing so. And they're okay with it too. And I will tell you why. Who are those people who are okay with it? I'll tell you in a little bit. So in Hindi, ये कहना था कि जो झूठ बोलते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो सच होता है ना उसको तोड़ मरोड़ के मतलब जो झूठ होता है उसको झूठ बना देते हैं और झूठ को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे यही सच है. और ये जो झूठ को सच की तरह प्रेजेंट करते हैं ना, ये धोखा देते हैं दूसरों को. और धोखा देने में उन्हें मज़ा आता है. उन्हें एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. ऐसे लोगों को जो झूठ बोलते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. उन्हें वो अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं. जो मालूमात होती हैं उनको छुपाते हैं, उनको पूरी तरह से नहीं बताते, वो लोगों को अंधेरे में रखते हैं. और वो दूसरों का एतबार तो खो देते हैं, लेकिन वो लोग भी खो देते हैं. वो सबसे बड़ी बात है. आप एतबार भी खो दें और आप लोगों को भी खो दें हमेशा के लिए, लेकिन उन्हें इस लॉस का कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि वो समझते हैं ये दुनिया ही सिर्फ उनकी जर्नी है. और मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये कौन से लोग होते हैं जिन्हें मज़ा आता है अकेले रहने में और अकेलेपन में, क्योंकि लोग उनको छोड़ देते हैं. लोग उनको छोड़ इसलिए देते हैं कि वो लोग समझते हैं कि इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है. और जब हम दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, हम दूसरों को ऐसा फील कराते हैं कि तुम तो बुद्धू हो, तो आपसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका कोई कैरेक्टर नहीं है. जो झूठ बोलता है उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं होता. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. Okay, now comes this point that what is it that stops a person from speaking the truth? What is it in the mind of a person, or in the character of a person, or in the psychological state of a person when he lies? What is it that prevents him from speaking the truth? So it is that surely what prevents one from speaking the truth is forgetting about the next world. When there is no accountability, very few people stay responsible. And that should be really the title of my video today, that when there is no accountability, there is less responsibility in people. So when people forget, when there are people who think there is no such thing as the next world, there is no accountability, there is no God, there is no divine, well, you can think whatever you want. It's your path. It's your journey. But that doesn't change the truth. And when people say that there is no accountability in the life hereafter, they are fine speaking the lies. They lie, they falsify things, and they are fine with the falsehood. तो इन हिंदी कौन लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या होती है, वो क्यों करते हैं ऐसा? जो लोग झूठ बोलते हैं ना, तो people can say कि भाई हम इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं. लोग कह सकते हैं कि मेरा ये मज़हब है. Trust me, those who lie, they actually have no religion. They have no faith. They don't believe in God, because this is the very first step. यकीन करें कि जो झूठ बोलते हैं
उनका कोई मज़हब नहीं होता। चाहे वो कितना ही खुदा की किताब को पढ़ लें, चाहे वो कितना ही आपके सामने किसी भी होली बुक के वर्सेस लाएं, उनका कोई मज़हब नहीं होता। जो झूठ बोलते हैं, जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो खुदा को नहीं देखते, उनका कोई मज़हब नहीं होता। तो झूठ कौन बोलते हैं, ये भी इमाम अली ने बहुत अच्छे से फरमाया है। उन्होंने फरमाया कि यकीनन झूठ वो बोलते हैं जो भूल जाते हैं कि इस दुनिया के बाद दूसरी भी दुनिया है। बहुत गहरा ये कोटेशन है, लेकिन उसकी मीनिंग देखें आप, कि जो भूल जाते हैं, जो इस दिमाग में नहीं रखते। कहना आसान है कि मेरा ये मज़हब है, लेकिन अगर आप भूल जाएं कि खुदा हर जगह हाजिर है, आप ये भूल जाते हैं कि मेरी दुनिया के बाद भी दूसरी ज़िंदगी है जहाँ सिर्फ मेरी सोल जाती है। जब आपको ये एहसास नहीं होता ना, तो फिर आप झूठ बोलते हैं। और कमिंग बैक टू इंग्लिश नाउ, I will say this, that it is falsehood when you say I heard it, and it is the truth when you say I saw it. What does that mean? Well, what that means is that if you heard something and you pass it on to other individuals, well, it's enough to call a person a liar. You have not seen it with your own eyes. You have not examined it. You have not made sure that what you are seeing is actually the truth. Then it's enough to call you a liar. So make sure that you don't just, whatever you hear, you don't just broadcast that to others without making sure that that's the truth. Back to Hindi, कि इमाम अली ने फरमाया है कि जब आप, झूठ क्या है कि आप कोई चीज़ सुने और उसको आगे बढ़ा दें, वर्सेस कि कोई चीज़ आपने देखी है और उसको यकीन किया है कि ये सच है, और उसके बाद आपने वो बात को आपने टेस्टिफाई किया है या उसकी आपने ज़मानत दी है उस बात की। तो ये काफ़ी है एक आदमी के झूठे होने के लिए कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे। Anyways, अब मैं आपको दूसरे मज़ाहिब की बात बताती हूँ. Let me go back to other faiths, because I did some readings on Torah. I did some readings on Bible, and of course Ramayana and Gita, which it's my passion, because I believe that divine has always, from the day one, been the same. He has tried communicating his rules over and over through the fellow humans, through messengers, and through a person's own, spiritual search. But again, for the betterment of humanity. Please remember that we have taken birth. Our soul has taken birth in this life. We were always remembering God even before coming to this world, because we were in a place of peace with God. And we are in love with him, but there was a reason for coming to this world. It's giving little workout to our soul in this form of the body before making the path of salvation easier, and becoming one with God, nirvana or salvation easier for our fellow humans and ourselves. It's that simple. And so what Torah says is, distance yourself from words of falsehood. तो हिंदी में इसको कहते हैं कि जो तौरात है, तोरा, वो कहता है कि अपने आप को दूर करें उन अल्फाज से जो झूठे हैं, उनको आगे मत बढ़ा दें. You must have heard many times जो reporters होते हैं, the newspaper reporters, how just to catch attention of the viewers or the readers, they publish false news. And so Torah, Moses has commanded us to distance ourselves from the falsehood. Back to Hindi, कि तौरात में ये है कि अपने आप को दूर करें झूठी इन्फॉर्मेशन से. आप देखते होंगे बहुत से रिपोर्टर्स ज़रा सी चटपटी मतलब न्यूज़ छाप देते हैं बग़ैर उसको वेरीफाई किए हुए कि ये सच भी है या ये झूठ है. और ये चीज़ मज़हब से बहुत दूर ले जाती है एक इंसान को.
और ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि आप झूठ बोलने में किसी को तो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को आप बदनाम कर रहे हैं, किसी का गलत नाम ला रहे हैं। और ये चीज़ जो है ना, ये खुदा के नज़दीक माफ़ होने वालों में से नहीं है। कुछ गुनाह कबीरा हैं और ये उनमें से एक हो जाती है फिर। नेक्स्ट, व्हाट बाइबल सेज, for my mouth will utter truth, and wickedness is an abomination to my lips. What a beautiful thing Bible says. That Jesus says, my mouth is always going to utter the truth. Whatever I am saying is true, is from God, is from divine. And my lips are never going to utter anything that's false. So, बैक टू हिंदी के इंजील जो बाइबल है, उसमें बहुत क्लियरली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मेरी ज़ुबान हमेशा सच बोलेगी, वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। मेरे जो लिप्स हैं, मेरे जो होंठ हैं, उनका झूठ से कोई वास्ता नहीं। उनका जो मैसेज है वो खुदा से आया है, और खुदा सच्चा है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सच बोल रहे हैं। रामायण में अगर देखें मैं, तो 5 ईवल्स बहुत अच्छे से बयान किए हैं, और ख़ास तौर पे मना किया गया है लोगों को वो 5 बुराइयों से दूर रहने के लिए ख़ास तौर पे कहा गया है। और वो सबसे पहली है झूठ बोलना, सबसे पहली, क्योंकि वो कहते हैं कि जो डिवाइन है वो सच है, और वो चाहता है कि उसको मानने वाले सब सच बोलें। उसके बाद आती है लस्ट, मतलब एक औरत के और एक मर्द के लिए सेक्सुअल फीलिंग्स। उसके बाद लालच, ग्रीड, और फिर गुस्सा, एंगर और जेलसी। ये चीज़ें सख्ती से रामायण में मना की गई हैं। Back to English, that in Ramayan, those who believe in Bhagwan Sri Ram or the Vishnu, they must have read Ramayan, and it emphasizes on 5 things to avoid. And one of the things that first and the foremost it says is lying. Always speak the truth. It says God divine is true. So if you believe in God, first step, speak the truth, be truthful. Then comes lust towards women or men, the sexual activities that are outside of a commitment, and greed and anger and jealousy. So why is it so important for me to talk about the good things? And that's also clear, like when I see the damage happening to society from deceiving and lying. I think it's very important that our future generations do not reap the fruit of our wrongdoings. And when we speak the truth in difficult situations, our children learn it, that no matter how hard it is, they are supposed to speak the truth and abide by their right doings and versus their wrongdoings. And what God says really is guide each other for what is good, and you will be one of its people, and oppose what is evil with your tongue and your hand, and make things clear to whoever does it by your struggle against it. Back to Hindi and Urdu. कि एक दूसरे को कि कोई ये सबक दें कि सही क्या है, और उसके बाद आप उन लोगों में से उन लोगों को ज्वाइन करें जो सच बोलते हैं, जो सही बात की तरफ गाइड करते हैं, और उस चीज़ को अपोज करें, उस चीज़ की मुखालफत करें जो बुराई है, अपनी ज़ुबान से और अपने हाथ से उसको रोकें कि नहीं, ऐसा मत करो, बुराई मत फैलाओ। और जो बुराई कर रहा है उसको बर्दाश्त करते हुए, मतलब आपने किसी ने आपका बुरा किया, उसको माफ़ करते हुए उसको आप वाज़े करें कि ये जो तुमने किया है ये गलत है। हमें no religion allows violence. Please keep that in mind. First and foremost, again, no religion allows violence. So, no violence, no hitting, no harming each other, but oppose it with your words
and your hand like this, that stop doing wrong things. Follow always the right process of reporting things that are against what is being done wrong to humanity. Follow the right process, that the law and order, but you cannot harm the other person. Forgive and forget. So that's my message for today. And I'll end here that practice truthfulness. To adapt one good hobby, you have to put it in practice for 40 days straight. And then it becomes your second nature. When you stop yourself for 40 days from doing the wrong thing, it kind of becomes your second nature. In Hindi, अपने आप को में कोई एक आदत भी डालने के लिए 40 दिन तक उस पर प्रैक्टिस करें, और जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं 40 दिन तक, तो वो आपकी सेकंड नेचर बन जाती है. सेकंड नेचर का मतलब ये कि आपके नेचर का पार्ट बन जाती है वो, और वो फिर आपके लिए आसान हो जाता है वो काम करना. तो अगर आपकी आदत है झूठ बोलने की, तो आज से ही आप उस पर काम करना शुरू करें, और उस अपने आप को कहें कि नहीं, मैंने सच बोलना है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बोलूँगी या बोलूँगा कितना भी मेरे लिए मुश्किल हो. ठीक है. सो I hope my today's session was helpful, and we'll meet again. Thank you again. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, और फिर हम दोबारा मिलते हैं. Bye for now.